Okay. श्रेया वॉइस नहीं आ रही है। अब बोल Good morning Voice to one issue. and all present here. Myself, Shreya Rai, with my co-host Shubham Mishra, on behalf of the whole CodeAdept team, welcome you all for this illuminating webinar, wherein our eminent speakers for the day, Mr. Mayur Misal and Mr. Aniket Malvia, will enlighten us on the topics like aptitude and coding. Shubham, please continue. ओके सो आप सबको पता तो है कि कोडेडेप्ट क्या है ना मैं फिर से एक बार बताता हूँ ना कोडेडेप्ट इज द बिगेस्ट टेक्निकल कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड एक्सक्लूसिवली by the Department of Information Technology. It has been organized every year since the past 5 years and this year as well. I would like to show my gratitude to Mr. Rakesh Imvani sir for the Esper community to be the co-organizer of this event. The whole purpose of organizing this event is to inculcate problem solving and logic building abilities among students of our college. Continuing the ritual of CodeAdept 6.2, this year we will bring back CodeAdept with the same zeal and enthusiasm. We will be having 3 rounds in CodeAdept 6.0. First round will be aptitude, second basic coding, and third core coding. The prizes will be given to all the participants. The participants of first round will be given certificate of participation, and the students who qualify round 2 will be given certificate of appreciation. Meanwhile, the winners will be given cash prizes worth rupees 5,000. Okay. So now, without wasting much time, let us invite our very first speaker, Mr. Mayur Misal. He is currently senior consultant at Deloitte, and he has also worked as assistant project manager at Tata Steel. He has completed his MTech from IIEST Shibpur. We welcome you, sir. Hello. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Good morning. morning, Yes, sir, sir. you're on. Good morning, sir. Yeah, hi, good morning, all. Sorry, actually, I had some network issue. Yeah, very good morning to all. Thanks, Shubham and Shreya, for inviting me for this session. Yeah, so as Shubham mentioned already about me, so I won't waste time on this introduction part. So let us go to straight to the session. I'll share my screen. Yeah, is it visible? Yes, sir. Yeah. So basically today's session is all about aptitude and reasoning, right? So this is very fundamental to anybody who's looking for to build on their understanding, logic, or critical reasonings, right? So today's session will try to. Sorry, I just want to confirm. Like, you're comfortable in English, Hindi, or mix? What should I prefer then? So I guess all the students here are comfortable with Hindi and English both. Yeah. So as you wish. Yeah. Okay. Then we'll go in English, Hindi, as and when required. So today's session basically divided into 3 parts, like what, why, and how. How part we'll see when we are convinced that why it is important to have the aptitude and reasoning. So firstly, we'll cover up on this what part.
So to begin with the session, meaning to make it more interactive, I have one brain teaser for all of you. So as you can see, like on the screen, there is one question mentioning the road, this river crossing, where these four friends are there, which like whom they want to cross this river with the help of boat. But they have only one boat which can carry maximum two people at a time, right? And like A, B, C, D. So this four people takes, if they go individually, it will take like minimum time to cross the river based on their capacity is 1 minute by A. B takes 2 minutes, C takes 5 minutes, D takes 10 minutes. So we need to find the optimum, like optimum meaning total minimum time required by all the friends to cross the river. So can I have some answer on this? Could you analyze this question and get some answer on this? Anyone who wants to answer can raise your hands. Yes, Jeet, speak up. Sir, 12 minutes. You can speak, Kartika. 5 minutes. Nine minutes. Sir, 7 minutes. 9 minutes, sir. Sir, 20, I think. So 9 minutes. You can continue solving the question while our speaker will rejoin the session due to some technical glitch. Sir, 7 minutes. ऑल्सो अपना सब अपने कमेंट बॉक्स में डाल दो ये, है ना, ताकि हम देख पाएंगे कौन कौन कर रहा है. Okay, Manish Kumar, tell me कैसे 7 मिनट? Explain करो अपना आंसर. Sorry, मैंने भी 7 मिनट आंसर दिया. sorry, I think I lost my network here. Yes, sir. Yes. Yeah, I'll just reshare. 23 minutes होंगे. मैम जो ए है वो 1 मिनट में ड्रॉप कर सकता है बाकी सभी लोगों को. Yeah, sorry, like any answer on this? Sir, 23 minutes. 23 20 minutes. Okay, okay. Yes, sir. 23 minutes. Okay. 20. Any other probable case? 23 is fine. Any other? काफी सारे any other responses हैं सर. 5 minutes है, 23 है, 7 minutes है, 19. 5 minutes. 5 minutes. Oh, yeah. 20 minutes is also fine. Okay, so we'll straight go to the solution part. I think like many of you have given the thought on this. So the correct answer is 17, right? Whoever got this 17, so they must have cracked the logic behind this question. So we'll just try to understand like what was the logic and how to crack this kind of questions while you're having this in your exam or any further test.
So basically, the logic was there's only one boat, right? And there are four people. We need to cross this river with the help of boat, right? So like for the understanding, this boat will go, drop, and then again come back, right? This is one funda. Second, meaning if we take this A, B, C, and D, so always try to optimize the travel time, right? Whenever you are going forward or coming back. So we need to optimize this travel time. So here, if we see this, we need to make the combinations telling this A, B, C, and D. So if we take this A and B, right, first combination, so it is coming cumulatively a minimum time out of this four, which is taking to cross the river. So initially this A and B will go, right? So it is cumulatively 2 minutes because we have to take the maximum time out of the combination. Now this B will be there, then A will be coming back. Like we have to compare again there, what is the minimum time, right? So there this B and C, so A is taking minimum, so we'll coming back with the A. Then here we have this A, C, and D, right? Now we have to take a call whether C, D, and A, like what should be the appropriate combination. So somebody can say that A can go with C, then C will be like staying back and A will come back, right? So that is also one of the options. But if you see the logical way, right? So D and C. So this two has like maximum time going there, right? So we'll just get in there, C and D will go, right? And then we have D already there, which has a minimum time to come back, right? So why we are taking a C and D, not A? I hope it is clear to all, right? We are taking C and D so that B can come back with the minimum time. So in way we are solving two hurdles. One is C and D, which have a maximum time. They can go across the river, and the minimum time of B we can come back. So then B will return with the 2 minutes, right? Then A and B can go together. So it's a cumulatively coming together 70 minutes. I hope it is clear. Yes, sir. Yes, sir. Sir, it is a Google interview question. Sorry? Sir, it is a Google interview question. Yeah, it was just a meaning brain teaser. Like you can see these questions many like everywhere, right? Many aptitudes have many interviews, so they ask this kind of question. So this was just a brain teaser, like not any categorization for any interview or so, right? Can we move forward? Yes. Yeah. Yes, sir. Yeah. So the first question, like first part of the session is what is aptitude and reasoning, right? So first we need to understand what exactly it is and like what does it mean. So aptitude in Oxford Dictionary, it is defined as natural ability or skill at doing something. So it's very raw definition of aptitude to make you understand on this part, meaning if you are able or if you are like good at doing this cooking, swimming, cycling, writing, anything you do, right? And you are able to do it. So that is your aptitude, meaning you know how to do it, right? So anything how to do it part comes as an aptitude. It can be your technical aptitude also, right? It can be your maths doing ability also. Somebody is good at writing essay, right? So that is their aptitude of doing something, right? So this was very raw definition of aptitude. Are we clear on this? Then I'll move Yes, to the sir. reasoning part. Yeah. Yeah. Then there comes this reasoning, right? So reasoning is basically a process of creating or generating conclusions from the evidences, meaning you have certain relations, you have certain evidences telling ki this is related to this, but you have to figure out how these things are interlinked or relation, how these are related to each other. And then you have to draw some conclusion telling ki yes,
या ऐसा होगा इसीलिए ऐसा हो रहा है. So that capability of analyzing or processing the evidences is called reasoning. Are we fine with this? Yes, sir. Okay, so now we are clear like what is aptitude and what is reasoning. Now we'll move to the like part or type of aptitude you can say. So there are various types, but from this examination perspective or from this understanding perspective, we are capturing few here in detail, telling this verbal reasoning or aptitude you have, then abstract type, then quantitative, logical, and data interpretation. We'll see in detail like how these are and what type of or like how does they look in questions, right? So first part is verbal. So basically it's all about the understanding and processing the words, right? So you will be given a set of words in the form of paragraph or in the form of sentences. You need to understand first what that exactly mean and process the concept, right? Process the concept or the logic behind that thing and then draw the conclusion based on that. So it's a more of testing your skill rather than just learn knowledge. Meaning you know the English well, right? But you have also like developed that skill to analyze that set of words or a set of paragraphs so that you can draw the conclusion. To make you familiar with this, like how this look like. So one of the questions from blood relations I have taken here, where one girl is there and one boy is there, right? So that girl is introducing the boy, telling that he is a son of daughter of the father of my uncle. So now we have to identify the relation between that girl and boy, right? So can we have some question like answer on this particular question? Then I'll be comfortable that I could make you understand what exactly it is. Sir, brother. Brother, right? Any other opinion on this? Yeah, I think we are fine then. The right answer is brother. So, so to make you understand like how this, however, this answer is brother, and you have given the right answer. But to make the forum understand what exactly and how we analyze this type of question, so it's a simple English, right? Here we are putting this thing in English sentence form. Now you have to identify the logic behind this, whatever sentence is written in this this thing, right? So here this girl is telling that this boy is a son of daughter of father of my uncle. So my uncle meaning the girl's uncle, right? So girl's uncle is there, then girl's uncle's father meaning her grandfather, right? Then grandfather's daughter meaning her aunt, then her aunt's son meaning her brother, right? So this is where this whole concept works and the logic works. Yeah, we'll move to the other type, that is the abstract type, right? So this is basically drawing the pattern, meaning you'll be getting this kind of figures in the question, and you have to identify the particular pattern, how these things are moving, right? And subsequently you have to identify the pattern and then logic, like how they are interlinked. So like to success to this kind of question is understanding the pattern, right? So here we have one question. So if you can identify that pattern and give some good answer to this. Sir, B. B, okay. A. Any other answer? A. Any other answer? A, sir. Yeah, A, sir. I got it.
I got it. A, B. Any other opinion? Sir, A. Okay. So majority is A. So the right answer is also A. Okay. So just to make you understand how this works. So this is there are four figures given in the question, right? So it is moving in some pattern. So if we analyze this pattern closely, so there are three blocks with black, white, and black. So all the figures have this pattern black and white, right? So the first figure is black, white, and black. Then second we can see this white, black, white, black, meaning we can see this addition of white black block over the black, right? And it is shifting and trying to capture this whole rectangular block. Okay, then second we have black, then again white. So obviously we can identify this pattern of addition of white black alternatively, right? So now we have to see this is white, right? So next will be obviously black. So the questions, like the options we have A, B, C, D. So we need to see that where we can find this black block first. So we have A and C. So likewise, you can eliminate your options also, meaning this is very helpful while having these questions or solving this kind of questions. You eliminate the first option. So you can increasing your probability to get the right answer. So this you must have done during your JEE preparation also, right? So this way we have A and C. Now we have to see key when this black block will be added over the white. So automatically this black will be coming somewhere here, right? So now we have black and black. So only this A and C have both this pattern. So another logic is this inner coast, right? Inner coast is blank here. So A is the correct answer because C has some block here, so it should not be the answer. A is the correct answer. I hope it is clear, right? Yes, sir. Yeah, so we'll move to the other type, that is quantitative aptitude. So basically it's a more of maths and involves processing the numbers through mathematical formulation and various operations, right? So it's like कि you know some formula, right? जैसे area का formula, rectangle area formula we know, that is length into width. So you will be given this kind of question telling that each side of the rectangle increased by 20%. So what is the percentage increase in the area? So you know the meaning. Initially you have to understand कि this area का जो formula है, that is length into width. So that is first thing you need to understand, right? Then only you will be able to solve this kind of question. So there is maths is involved, right? So can we have some answer on this? Meaning, if you can, like it's a basic maths, you can do these questions answer. So we got our first response as C. C, 44%. Okay. Then also 40. Also 40. Okay. 44, 40, yes. So 44. 44. Great. Any other opinion? Yeah, so we have 40, 44. Somebody was telling 50 also. So we'll see the right answer. So that is 44, right? 44 is the right answer. We'll see how it is meaning coming to the 44. So it's like we know this area is length into bit, right? So the first like original length and original bit we know. The revised, right, based on this increase of 20%. So it is going somewhere 1.2 and 1.2, right? So after multiplying 1.2 into 1.2, it is coming 1.44. So area is 1.44 times of original area.
So obviously we can see this, there is a increase of like 0.44. So this is our meaning percentage increase, 44%. Are we okay with this? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yeah. sir. Yeah. Yes, sir. So like this kind of questions basically need your mathematical understanding also, right? And the numbers, like how these numbers move, the basic formulas. So this is all we learned when we were like in seventh, eighth, or ninth. So that those basic formulas only we'll be using here to solve this kind of questions. Yeah, we'll move to the other part, that is logical reasoning. So as this number name says, it's a more of building the logic uh, behind like whatever scenario or situation is given, right? Whatever premises is given and the relations between the premises. You have to draw the logical conclusion telling, yeah, अगर ये दोनों यहाँ पर इस तरीके से है, so ये इस तरीके से होगा. ये this you need to draw out of the given set of thing, right? So we'll just see one question here. So this is one question where this set of data is given, right? Mentioning these are there and they have some relation between them, right? So accordingly, like we need to fill in the blanks out of given set of options. So could you give some thought on this and B. Sir, B. Sir, B. B? Okay. Any other opinion? B, sir. B, right? Okay, so yeah, so the correct answer is B. So how we came to this meaning B part? Can somebody explain like how we are coming to B part? सर जैसे कि जो फर्स्ट है वो है P2CD और Right. सेकंड में गैप है और थर्ड है PCD4 तो Right. और फिर थर्ड वाले में B5CD है और Right. फोर्थ वाले में PC6D होगा और फिर जो नेक्स्ट आएगा वो जो सेवेंथ वाला होगा वो लास्ट वाली पोजीशन पे चला जाएगा. तो पहले 5 था फिर 6 हुआ फिर 7 तो ऐसे ही 2, 3 और 4. Okay. Yeah, that was the logic. So basically you have to analyze the adjacent, meaning the premises you have to analyze, and based on that you have to come to the conclusion. So rightly said. Yeah, thank you for explaining. Yeah, another question you may come across during your this test is data interpretation. So this is basically a combination of all of the above, right? So there you will find this table, like data in the form of table, graphs, and other statistics formulations. So you need to analyze those data and like give the logical and analytical based solution, right? So for an example, here we have this six branches of some company, right? Where this 2 years of sales data is given, right? So you may be asked like please give the ratio or percentage or absolute sales for so and so branch for so and so period, right? That kind of question you may come across. So here we have one question telling this like what is the ratio of total sales of branch 2, right, for both the years meaning 2002 and 2001 to the total sales of branch 4 for the total like both the years. So now we have to give this branch 2 and branch 4, इसका क्यूमुलेटिवली जो सेल्स है दोनों का बोथ द ईयर्स में उसका हम लोग को रेशियो निकालना है. सो कैन आई हैव सम आंसर ऑन दिस? Sir, 180, 140 is to 180, which is equal to 7 is to 9. Excellent. Yes, sir.
Yeah, so it was like simple question, but you may come across various type of wording here. You may be asked that increase in sales from B to B3, right? Or percentage decrease from 2002 to 2001 for the branch 2. So that kind of, basically it's a more of analyzing this table and then do some mathematical formulation or calculation. Then you have to like come to the conclusion telling that, yeah, it will be there. Right? Are we okay with this? Can we move forward? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So here, Yes, sir. yeah, here ends the first part, meaning what is aptitude and what is reasoning. So I hope we are clear on that part. Now we'll move to the why part, meaning why this aptitude and reasoning is important, or why should be learning or having this aptitude and reasoning, right? So basically this aptitude and reasoning, so it develops your approach towards any problem, telling that it's not only a problem, we can derive the solution to it. That is a solution oriented approach will be developed while practicing this kind of questions. Another is critical thinking, right? So like any topic or any subject you are given, right? So you can give your meaning thought on that. You can derive some conclusion out of it. Ki this is that because of so and so reasons, right? Then logic building, like why it is happening or how it is happening. So that kind of logic building will be developing through this exercise. So it is very important for any graduate. I would not say only for the IT people or only for the mechanical people. Any engineering graduate, in fact, any graduate or anybody who wants to like have this kind of capabilities or to develop on this kind of solutions. So they need to have this aptitude and reasoning in their curriculum, or they should practice this aptitude and reasoning, right? The second part is like very interesting. Like you are you must be in second year, third year, fourth year, final year, right? So you must be preparing for campus drive. Everybody prepares. So like this is the first stage in many campus placement drives where these companies try to like set up their requirement, meaning they put these questions as per their requirement, and they analyze that like whosoever is getting onboarded, so that they are getting the suitable candidate or not. So this is important from that perspective also. Yeah. Then if somebody is thinking of higher studies, they don't want to go for campus drive and other things, they are thinking of higher studies. So there also almost if you name GATE, CAT, GRE or any other exam, so you'll find like this aptitude and reasoning some way the part of their taste. So it definitely will be a one or like then the part of their entrance exam. Then next, if somebody is thinking of government competitive exams like UPSC or state PSC or SSC, so they have also this aptitude and reasoning as primary screening tool, right? So like somebody is thinking of preparing for government competitive exam, so there also it is very crucial. And not only this, meaning these were the benefit perspective, but if in a day-to-day life also, right, meaning in real life also, or in a like any work you are doing or any corporate you are joining, right, any work culture or any work you are there, so there also to analyze the situation, the arise situation, to solve the problem. So day-to-day life also you face this, like आज मेरा प्रोजेक्ट का सबमिशन होना था बट हुआ नहीं, सो मेरे पास में अभी सिर्फ 3 घंटा है, मेरे को प्रोजेक्ट सबमिट करने का है, तो उसको बनाने के लिए व्हाट आई टू डू, ठीक है, और उसको कैसे करना है, दोस्त से मदद लेना है या फिर दोस्त से बना के उसका कॉपी पेस्ट करना है. सो ऑल दोस थिंग्स कम्स अंडर दिस, सो दिस विल हेल्प यू इन दैट आल्सो, राइट? सो
Yes, sir. So this was all about why. So are we clear on this? Then only I'll move to the how part. Meaning, are we Yes, convinced that sir. it is important? It is important to have aptitude and reasoning. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So now we'll move to the other part of it. That is how to get there, how to prepare, or how to build the understanding on these parts. So for basic understanding, meaning you must be knowing like whatever aptitude or reasoning is there. Is whatever we learned during our school time up to high school or maybe higher study, like higher secondary also. So whatever we learned there, we were doing this in conventional way, right? So that you know already, but for the like making the understanding or building understanding, you can refer this reference books like R.S. Agrawal is there, Arun Sharma is there, or different many other authors are also there. So you can get the understanding from there. Online resources are there, like Prep Insta is there, right? Geek for Greeks is there. Then obviously YouTube is there. So YouTube पे तो आजकल now and then like everybody is having this channel and they are putting this knowledge on there. So you can refer for the understanding building and start practicing on the basic questions, right? Don't jump directly to the cat level of questions. Start with a very basic, fundamental, right? Then slowly advance your level, correct? And during preparation, this is my way of preparing for this. What I did, I used to do this question first with conventional way, meaning that that area and perimeter of questions are there, right? Or this time and distance questions are there. So I used to do it conventionally. What is there, how it is going that way. So that will help you to build the concept or understanding. Then move to the short tricks, right? So just to make you understand one question I have, which I have put it in a conventional and like another is a short trick way. So Mr. A buys an old scooter, which is of cost 4,000 and he spends 500 on its repair, right? Then he sells that scooter at a cost of 5,400. So his gain percentage is asked, right? So it's a two-way of doing this. So one is conventional way. I'll do all this this calculation and then come to the solution. Another way is just get the key data and analyze it, meaning the cost price, selling price, and then gain or loss. So this is like there you can develop this kind of your own tricks and methodology to solve any questions, right? And to like after having this complete understanding or concept building, then you can move to that to test your understanding. So there is one website which is free, IndiaBix, where you can find like a number of questions on the various topics. It is like topic wise categorization on the topic, this subject. Yeah. And like lastly, I will say the key to success in aptitude and reasoning is like practice, practice, and practice. Nothing like practice. Okay. Yeah. So any question on this? Anyone want to ask the doubt? You can raise your hands. I hope I could justify to the time, like whatever time you are spending here. So I hope I could make you understand the subject. Yes, sir. So we have some doubts. Yeah. Rajul, you can continue. हेलो सर। सर जैसे कि एप्टीट्यूड और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पे है,
तो ऐसा बोलते हैं कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, इससे एप्टीट्यूड नॉलेज बढ़ता है आपका, मतलब उसके कंसंट्रेशन बढ़ता है आपके माइंड का, तो हमें वो भी ट्राई करना चाहिए क्या? Uh, yeah, it is very true. Because if you go with this old quote is there, right? So where it means that the healthy mind is there in the healthy body. So आपका अगर बॉडी जो है, अगर आपका हेल्थ है वो अगर अच्छा रहेगा तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, हेल्दी रहेगा. सो देयर यू कैन लाइक grasp the things quickly और analyze the things quickly. तो वो हमेशा जैसे बोलते हैं कि 8 आवर्स का मिनिमम सफिशिएंट नींद होना चाहिए. या फिर फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो दैट वे इट इज मीनिंग हेल्पिंग यू टू not only build your stamina but your mental health is also getting this. या फिर अगर आप बोलते हैं कि भाई मैं योगा एक्सरसाइज ये सब भी करती हूँ तो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल. Okay, sir. Thank you. Yeah. Yes, Anmol, you have any doubt? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन. Yeah. मेरा डाउट ये था कि जैसे हम लोग जेई बैकग्राउंड के बच्चे हैं, हम लोगों ने आरडीआरएस अपने टाइम पे सॉल्व कर ली थी, Yeah. बट वी सॉल्व इट अबाउट 2 ईयर अगो. Yeah. तो सर बेसिक वापस आरडीआरएस से शुरू करना ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर कुछ इंटरमीडिएट लेवल की बुक्स हैं? नहीं, जैसे मैं बुक्स के बारे में आपको बोला ना, देखो मतलब हम लोग के साथ में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के साथ में क्या ना, एप्टीट्यूड रीजनिंग कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता. इनफैक्ट यू सी द स्टैटिस्टिक्स यूपीएससी एंड अदर थिंग्स, सो देयर इंजीनियरिंग पीपल आर डूइंग वेल रादर देन आर्ट और एनी अदर बैकग्राउंड पीपल, बिकॉज हम लोग का एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है. वी आर ट्रेन्ड फ्रॉम द लाइक this kind of environment, right? So यहाँ पे भी options रहते हैं, questions रहता है, options रहते हैं, तो we are trained for that कि how to eliminate the options और उसमें कैसे correct answer पर पहुंचना है. So we are thinking in a that way, right? So इसमें आपको आपका अंडरस्टैंडिंग है, you have learned till 10 and 12, आपका अंडरस्टैंडिंग है. Now you have to build your अंडरस्टैंडिंग और now you have to work on that. So उसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि जो वेरियस बुक्स आते हैं, आर.एस. अग्रवाल है, अरुण वाला बुक है, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं. डोंट गो विद द बुक्स आल्सो. अगर आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है तो देयर आर सर्टेन यूट्यूब चैनल्स. अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे. तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, मीनिंग प्रिपेयर वन इंडेक्स, आपका खुद का इंडेक्स बनाओ. डोंट गो विद द बुक, प्रिपेयर योर ओन इंडेक्स कि मेरे को वर्बल में क्या क्या कवर करना है, राइट? फ्रेजेस है, सिनोनिम्स है, राइट? या फिर मुझे इसमें कॉन्ट में क्या क्या कवर करना है, ठीक है? लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या कवर करना है, वो खुद का एक इंडेक्स बनाओ. इंडेक्स में टॉपिक वाइज गो, मतलब डोंट गो इन लाइक हैजार्डस. मीनिंग ऐसा नहीं कि कभी पजल अप हो गया, कभी मैंने लॉजिकल कर लिया तो आज मेरे को फिर डीआई का क्वेश्चंस ये करना है. वो करो, वो बाद में करो, लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग बना ली, खुद का एक इंडेक्स बना के ना, उसका जस्ट एक इंडेक्स बाय इंडेक्स जाते जाओ. पहले एलआर, फिर वर्बल, फिर डीआई, राइट? दैट काइंड ऑफ थिंग यू कैन फॉलो. दैट आई यूज्ड टू फॉलो. मेरे पास अभी भी जो मेरे पुराने नोट्स है उसमें आई हैव प्रिपेयर्ड दैट इंडेक्स. इंडेक्स बाय इंडेक्स आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट्स. यस सर, थैंक यू वेरी मच सर. या Yes, you can ask your doubt. लॉजिकल और ये वाले प्रॉब्लम्स लगाते हैं तो बहुत सी बार हमसे नहीं बनते हैं, तो हम कितने टाइम तक एक प्रॉब्लम को टाइम दें और फिर उसका सॉल्यूशन पे जाएं? एक्चुअली डिपेंड्स कि आप वो प्रिपरेशन फेज के टाइम की बात कर रहे हैं, एग्जाम हॉल की बात कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली एग्जाम हॉल में अगर है तो उस क्वेश्चन को अगर नहीं बन रहा है, या हाँ, तो प्रिपरेशन में क्या है, बेसिकली लॉजिकल में हम लोग इस तरीके से, मतलब व्हाट आई यूज्ड टू फॉलो, आई विल टेल यू माय वे ऑफ डूइंग इट. सो फर्स्टली ट्राई टू गेट द क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन का पहले समझ लो. सो हर लॉजिकल क्वेश्चन में ना देयर इज वन मतलब कैटेगराइजेशन, देयर आर सर्टेन कैटेगराइजेशन इन द लॉजिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो पहले वो कैटेगराइजेशन समझना जरूरी है आपको. लॉजिकल में जैसे सपोज करो कि अभी वी वर डूइंग वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एबीसी वाला, दैट नंबर वाला पैटर्न, राइट? सो वहां पे कहीं ना कहीं वो लॉजिक रहेगा कि वेदर दैट नंबर इज लिंक्ड टू दैट कैरेक्टर एबीसी, और ऐसा भी हो सकता है कि दैट नंबर इज मल्टीप्लायर और दैट इज अ स्क्वायर ऑफ समथिंग,
right? So वो pattern या categorization समझना. So there are certain categorization in the logical type of questions. So पहले वो categorization को आप analyze कर लो, and then जब whenever you find this question, so try to fit that question in that category कि भाई ये particular category का है. Then उस category को solve करने के लिए what is the way, what is the probable kind of approach to get the right solution, वो आप वहां से derive करके meaning come to that question. तो आपका क्वेश्चन ये है कि आप उसको एनालाइज करके कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए. तो जब प्रिपरेशन टाइम में है तो आप उसको एक बार 2 बार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. बट मेरा पॉइंट ये है कि आप ट्राई टू गेट दैट कैटेगरी फर्स्ट कि वो लॉजिकल का किस कैटेगरी में बैठ रहा है. वहां से यू कैन डेफिनेटली गेट सम आइडिया कि इसको कैसे सॉल्व करके आगे बढ़ना है. सो दैट इज माय स्टैंड ऑन दैट. Okay, sir. Thank you. Yeah. Any more doubts, anyone? Guys, this is the Sir, time you क्या- can ask questions. Okay, continue. सर क्या आप अपना एक्सपीरियंस जो आपने अपनी इंडस्ट्री में लिया है वो एक बार शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ? सॉरी आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? सर क्या आप अपना एक्सपीरियंस जो हमने आईटी इंडस्ट्री में डिलॉयट में और टाटा स्टील में लिया है वो एक बार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? Okay, working experience you're asking. Acha, sure. So first of all, I'm not from IT background or I'm not doing any IT project here. So basically it's a capital project, right? So I have been in capital projects been like 7 years now. 6 to 7 years I'm in capital project. So capital project meaning it's setting up the new facility or anything infrastructure project, right? Road or highways, or setting up any industrial company. In a layman language, if I want to make you understand, so अगर कोई कंपनी चाह रही है कि मेरा खुद का एक प्लांट लगाना है कहीं पे, ठीक है, तो उसके लिए जो भी प्रोजेक्ट रहेगा, उसके लिए भी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना होगा, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, बजट एस्टिमेशन, वो सारी चीजें जो है वो मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ माय जॉब. उसका प्लानिंग करना, उसका शेड्यूलिंग करना, दैट इज ऑफ माय पार्ट, जॉब पार्ट. So इसमें टाटा स्टील में when I was there, so I was working for this phase 2 expansion, meaning Tata Steel was expanding its capacity from 3 MTP. MTPA is million ton per annum steel से उसको बढ़ा के 6 MTPA का प्लांट बनाने जा रहा था. तो उसके लिए there were various facilities, मतलब स्टील प्लांट में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे एक जगह पे आपका आयरन ओर आता है, आयरन ओर से फिर बाद में उसको हॉट मेटल बनता है, हॉट मेटल बनने के बाद में उसको फिर मेटलर्जी करके उसमें जो भी अलॉइंग एलिमेंट है उसको मिला के वी डू दिस लाइक उस हॉट मेटल को स्टील में कन्वर्ट करते हैं. और फिर स्टील जब बन जाता है तो फिर उसके वेरियस कास्टिंग करके फिर अलग अलग चीज हम लोग बनाते हैं. जैसे स्लैब बनता है, स्लैब से फिर उसको रोल करके भी प्रिपेयर दिस स्ट्रिप्स, मतलब जैसे जो आपने अगर देखा होगा जिसको पतरा बोलते हैं हम लोग हिंदी में अगर बोलेंगे, तो पतरा जो होता है ना, जो स्टील का पतरा होता है, वो उसको रोल करके बनाते हैं. या फिर जो आपने सरिया वगैरह देखा होगा, राइट, रिबार्स वगैरह जो होते हैं, वो बनाने का जो सेटअप है वो लगाने की जिम्मेदारी हमारी वहां पे थी टाटा स्टील में. सो देयर द वर्किंग एक्सपीरियंस आई वुड से कि बहुत अच्छा था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट था और यहाँ पे डे नाइट वर्किंग शिफ्ट होता था. सो वहाँ पे लोगों को मैनेज करना, साइट पे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते थे, एक्सीडेंट्स हो जाते थे, तो उसको कैसे टैकल करना है, लोगों के साथ में कैसे हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन. ठीक है, बहुत बार पैनिक सिचुएशन भी हो जाती थी कि जो वर्कर्स है दे आर नॉट मीनिंग फॉलोइंग योर लाइक टाइम या शेड्यूल. उनका अपना एक शेड्यूल होता है, उनको लंच ब्रेक टाइम पे चाहिए, राइट, उनका एक रेस्ट का टाइम होता है. सो ये सारे कंस्ट्रेंट्स को लेके यू मतलब आपको एक थोड़ा दिक्कत होती है, मतलब ऊपर से आपको प्रेशर आ रहा है बट नीचे यू कैन नॉट पास ऑन दैट प्रेशर, राइट. आपको अपने पे होल्ड करके, क्योंकि आपको काम भी करवाना है, ऊपर वालों को तो सिर्फ आप पे चीजें डालनी है बट एक्चुअल काम तो आपको करना है. सो वो सारी चीजें हैंडल करते हुए आपको काम करवा के लेना है. सो वो सारी स्किल्स यहाँ पे आपको हेल्प करती है. जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम की बात करूँ तो कॉलेज टाइम में आई यूज्ड टू हैव दिस फोरम्स, मीनिंग जो अभी आपका जो
you must be having some forum, student forum. So there has to lead this forum. ठीक है, सो उसमें जो भी काम करवाना है, कुछ एनजीओ के साथ में कोलैबोरेट करके लोगों के साथ में स्वेज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की एक्टिविटीज हो गई, या फिर ऑर्गेनाइजिंग दिस काइंड ऑफ सेशंस, राइट, हैविंग वर्ड विद लाइक सीनियर पीपल फ्रॉम टॉप कंपनीज, उनके साथ में कैसे मीनिंग उनका जैसे सेशन कंडक्ट करवाना, या फिर हम लोग स्पॉन्सरशिप लेके आना. सो दैट वे इट इज लाइक it was helping me to gain the confidence as well as to build on the people management skill. So whenever or wherever you are going, right, so this people management is the key to get the work done. अभी तो आप जैसे कॉलेज में हो, जैसे आप वर्क में जाओगे तो वहां पे आपको पीपल मैनेजमेंट विल हेल्प इन अ वे. ठीक है, तो आपको लोगों को कैसे मैनेज करना है, कौन से आदमी के साथ कैसे डील करना है, ये आपको सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि अभी तो कॉलेज में सब दोस्त है, बट जैसे ही आप कॉर्पोरेट में घुसोगे या जैसे ही आप इसमें जाओगे, वर्क कल्चर में जाओगे, तो वहां पे कोई किसी का दोस्त नहीं होता. एवरीबडी विल बी लाइक मुंह पे सब अच्छे बोलेंगे, बैक में आपको बैक स्टैप करेंगे. सो इसलिए आपको कॉशियस रहना है, डील करना है उनके साथ में. दैट वे इट विल हेल्प, राइट. So उसके बाद में फिर Deloitte Consulting में I'm here. So it's also a capital project advisory where I'm working as a PMO. So वहाँ पे Tata Steel में I was working as a client. We had several vendors and this consultants to help us to complete the project. Now me myself is working as a consultant to somebody else who is setting their plan. So altogether that's change of side, meaning client से consultant side में आना, right? So how to deal with the client, right? क्योंकि client is always a boss. ठीक है, boss से भी ऊपर होता है client. तो client जो बोलेगा उसको कैसे उसको convince करना है, how to get the things right. ठीक है, what will be good for them. वो सारी चीजें निकाल के उनको बताना. So that is something unique. Yes, sir. Yeah. So, sir, thank you, sir, for your session. It was surely helpful for our listeners. Yeah. And, sir, एक request है कि आप ना एक जो आपका जो PPT है वो बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो हमें प्लीज शेयर कर दीजिए. Sure. And डाउट सेशन हम फर्दर बाद में कंटिन्यू करेंगे. Yeah. So, yeah, continue. Thank you, sir. Yeah, thank you so much. Now, I would like to invite our next speaker, Mr. Aniket Malviya, for the code evolution session. Mr. Aniket Malviya is the technical lead at Waymo, ex-software engineer at Amazon, ex-software engineer at Freo. He has completed his Bachelor's of Technology in Computer Science from Man at Bhopal. Aniket, sir, the stage is all yours. Hey, hi friends. I'm very much delighted to come over here and speak with you all. So yeah, let's get started. Let me share my screen. Okay. Yeah, guys. So let's get started. So I am Aniket. I have like 7.5 years of experience. Currently, I am working as a Waymo in technical lead in Waymo, and yeah, like it's like 1 year completing. I have completed in Waymo. I am working as technical lead. Waymo is like a sales mobile app, which makes the sales for our clients easier. Yes, let's get more about me. So yeah, just I have said, I have like 7.5 years of experience in IT industry, and I have completed my BTech degree from NIT Bhopal with 7.5 CGPA. I'm working as tech lead in Waymo currently. I have interviewed for around 50 plus companies and have taken 150 plus interviews. Also, I have worked in Amazon for 4.5 years and have taken interviews for Amazon too. So
yeah, it's I think I have the correct knowledge and perspective of how people, like how we are hiring people. हम लोग कैसे लोगों को हायर करते हैं, what we are looking for, क्या आपको आना चाहिए, क्या आपको मतलब पढ़ना चाहिए, that I have like full context around it. So currently, so after like 4.5 years working in Amazon, I have like shifted to startups basically to understand more startup and the ecosystem in our IT industry in India for startups basically. So I have like a interest in having my own startup someday. So that's how like I have started my journey. So here in code evolution, I am invited to tell you more about coding, right? So let's get started on the coding part. क्या है कोडिंग, क्यों है, हम लोग क्या करते हैं, क्यों करना चाहिए, करेक्ट? सो कोडिंग इज अ वे थ्रू विच वी कम्युनिकेट विद कंप्यूटर. सो लेट्स से अगर आप लोग मुझे समझ पा रहे हैं और मैं आपको समझ पा रहा हूँ, तो हम लोग एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो कि मीडियम है, राइट? तो अगर हमको कंप्यूटर से बात करनी है तो हमें उसकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी. एंड सेम वाइस वर्सा कंप्यूटर को हमारी बात समझ में आना चाहिए और हमें कंप्यूटर की बात समझ में आना चाहिए, राइट? सो इट्स लाइक कम्युनिकेटिंग विद कंप्यूटर इन अ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. एट द कोर, computer can understand only machine language, right? Which is zeros, ones, right? तो ये है कोडिंग बेसिकली. अब हम लोग मशीन लैंग्वेज में सीधे सीधे तो बात कर नहीं सकते, राइट? हम लोगों को समझ में नहीं आती है कि if we only have to talk in zeros and ones. It was happening in 1940s. You would have seen the movie Imitation Game, where for the first time Nazis were like having encoded message, which on the Britain side they have discovered a way to understand that code, correct? So that was the first computer from the Imitation Game. So what are some languages for coding? Basically assembly language जो 1960 something discover की गई थी. Then C++, Java, Python, बहुत सारी होती हैं. Let's move to the second thing. Other languages, some of the common languages are machine language, assembly language. Then there comes high level languages. In it programming languages होती है, कुछ procedural programming होती है जो step by step आपको execution के commands देने होते हैं. C++ हो गई. Then object oriented programming languages. C++ जो है वो दोनों होती है, procedural भी होती है, object oriented भी होती है. It's on top of C and basically covering the object oriented part also. Object oriented के अलग more example to give is Java. Then come scripting languages. JavaScript हो गया, Python भी scripting language है, but server side पे. Perl on the same part is on server side also. Some of the front end specific languages like markup languages जो है वो HTML, CSS. And then there comes query languages, SQL and R. I think you guys would have known. So there is no limit on how much you can learn. But to start, you should be taking 2 to 3 languages to get that. Like 2 to 3 languages will help you in most projects basically, right? जैसे कि like let's say if you just want to create a website of yours, right? So आपको HTML, CSS आना चाहिए. Then आपको backend के लिए कोई एक language रखनी पड़ेगी. JavaScript भी आप कर सकते हो backend side पे, Node.js हो गई, या कुछ और language तो Python या backend run कर सकते हो Java से. And there comes the SQL. Like अगर कोई database से आपको उसको link करना हो तो you can cover SQL, क्योंकि basically जो हमारे normal DBs होते हैं जो कि free of cost होते हैं वो होते हैं MySQL, right? And some of others also like PLSQL हो गया या MSSQL हो गया. So you can complete one of your website or projects in learning 2 to 3 languages. So my next part is how to start coding. Okay, so like let's say you guys are like I
came to know कि मेरी जो ऑडियंस है वो फर्स्ट ईयर मोस्टली एंड देन कुछ लोग सेकंड ईयर से देन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कुछ लोग. So to start, like how will you start coding journey of yours, right? So I would suggest कि choose a language, like जिसमें आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने का सोच रहे हो, को उस लैंग्वेज को चूज करो. देन उसको डीप में स्टडी करना पड़ेगा. कुछ लैंग्वेजेस हमें बहुत डीप में स्टडी करना पड़ेगा. इन फ्यूचर व्हेन यू विल कम इनटू इंडस्ट्री यू हैव टू बिकम लैंग्वेज एग्नोस्टिक बेसिकली, कि आपको बोला जाए कि लाइक यू आर सपोज टू वर्क इन अ प्रोजेक्ट व्हिच हैज लाइक डिफरेंट लैंग्वेज, देन यू शुड डेफिनेटली बी लर्निंग दैट लैंग्वेज आल्सो. बट बहुत डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना पड़ता है. पर अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हो आपकी जर्नी और आपको इंटरव्यूज देने होंगे तो देन you should take one language, right? And उसमें आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे आगे जाके और डीप में पढ़ोगे उस लैंग्वेज को. बेसिकली आपको लाइक हाउ दैट लैंग्वेज टॉक्स टू कंप्यूटर बेसिकली, मतलब हाउ इट इज allocating memory and all those things you should be knowing by initial phase. So next is start with learning a language and then start writing basic programs in it. कुछ basic programs जैसे कि like I remember कि शुरुआत में मैंने C सीखी थी एंड C में मैंने पिरामिड्स बनाए थे बहुत सारे. तो दैट इज समथिंग लाइक बेसिक प्रोग्राम्स लाइक फॉर लूप लगा के एंड लाइक डबल फॉर एंड अरे यूज करके आप बेसिक प्रोग्राम्स लिखते हो. एंड इनमें से कोई सी भी आप एक C++, पाइथन, जावा, JS, HTML, मतलब इसमें मोस्ट बेसिक जो लैंग्वेजेस है उसमें स्टार्ट करो कोडिंग. अगर आप वेबसाइट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो आप HTML, CSS से स्टार्ट कर सकते हो, then JS सीख सकते हो. So to start coding, these are the languages. If you want to code more on front end side, go with HTML, CSS, then JS. If you are more inclined कि आप अगर जैसे कि नॉर्मली ऐसा होता है कि माइनर प्रोजेक्ट या मेजर प्रोजेक्ट आपकी टीम्स होती है, राइट? तो किसी को फ्रंट एंड आना चाहिए, किसी को बैक एंड आना चाहिए, किसी को डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस आना चाहिए बेसिकली. तो if someone is more inclined towards back end side का कोड लिखने में, तो then they can go with C++ या जावा या पाइथन, जिसमें भी आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो. If you want to get database engineer, then you can start with this skill. अगर आपका एम है कि आप आगे जाके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे या आप डेटा साइड में आप ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, ML वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रुचि रखते हो, तो देन आपको SQL से स्टार्ट करना चाहिए. बट इट्स नॉट दैट यू शुड लर्न ओनली दिस लैंग्वेज वन बाय वन, बट यू हैव टू, आई थिंक इन योर कोर्स ऑल्सो यू विल बी लर्निंग इन द सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दीज अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो. बट आपको कहीं से स्टार्ट करना ही है, तो देन स्टार्ट विथ one language first, then start second and then third. 2 to 3 you should know throughout the college. Next जो main basic हमारा जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें आता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. आप आगे जाके आपको अगर कोड करना है इन बड़ी यूनिट में तो देन डेफिनेटली आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का नॉलेज होना चाहिए. इसके अलावा भी आप बहुत सारा कोड लिख सकते हो, बट स्टैंडर्ड ये है कि लाइक कंपनीज में इंटरव्यूज में आपसे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स तो पूछेंगे. क्यों पूछेंगे? बिकॉज इट्स लाइक इट्स वेरी थ्रू आउट. मतलब कुछ जो एनॉमलीज या आउटलायर्स होते हैं उसमें कंपनीज इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती है, बट दे वांट टू बी मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स hiring those people who are like at least knowing the data structure and algorithms. So what are those? So basically data structure is a data organization, management and storage format that is usually chosen for efficient access to data. How the data is allocated in the memory is what is a data structure is. So like, what are those examples are like arrays, stack, queue, heap, hash map, and all the others like tree, graph. These are like advanced try. So you should learn those things. Like you should at least be coding some questions around it to understand it, and then just more and more basically. Then what are the algorithms? So an algorithm is a procedure or set of steps to doing or solving a problem to perform a computation basically. लाइक जैसे कुछ भी हम लोग नॉर्मल किसी भी काम को करने के लिए कुछ ना कुछ सेट ऑफ स्टेप्स यूज और फॉलो करते हैं, राइट? बेसिक चीज़ों की भी आप एल्गोरिथम बना सकते हो. और अगर आप बड़ा कोई काम करने जा रहे हो या बड़ा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड हैव सम लिस्ट कि हाँ दिस थिंग्स आई विल बी डूइंग टू
perform this question, computation, or problem solve. Basically, algorithms and data structures helps you optimize the time and space. आपको आप जब छोटे प्रोग्राम्स लिख रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि इतना मतलब मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर मान लो कि कोई प्रोग्राम जो है वो 100 मिली सेकेंड्स में रन हो रहा है और अपने डेटा स्ट्रक्चर को और ट्वीक करा, ऑप्टिमाइज किया और उससे वो 10 ms का हो गया, दैट इज फाइन इन स्मॉलर पार्ट, राइट? एक कंप्यूटर के लिए बहुत अच्छा है. बट अगर आप किसी चीज को लार्ज एप्लीकेशन और मल्टीपल यूजर्स के लिए स्केल करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा अंतर नजर आएगा. अभी रिसेंटली मतलब हम लोगों ने लाइक नोटिस किया कि लाइक अगर हम लोग कुछ ट्वीक करेंगे हमारी लाइक कुछ सर्विसेज में, तो उससे लाइक इट विल save us like a huge amount of money for us just by saving optimizing some of the algorithms, right? So that is how the data structures and algorithms work. Basically, it will like help you optimize the time and space. If you know the better algorithms, if you define better data structures, then it will be helpful for you in the future, of course. Next part. What is competitive programming? So I keep on saying I should do competitive programming. So what is competitive programming? So for competitive programming, you can choose a language in which you are gonna do context and like competitive programming. पहली बात तो है क्या, मतलब आपको एक लैंग्वेज पकड़ना है उससे, और जो वेबसाइट्स होती है जिसमें बहुत सारे कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं उसमें आपको पार्ट लेना है. क्यों लेना है? क्योंकि देयर इज लाइक द रियल कॉम्पिटिशन. यू विल सी कि what your other competitors are doing, how they are preparing, how the a problem is being solved. All those things are like towards the competitive programming. कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि हैकर रैंक, लीड कोड, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, जिसमें आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो. क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये इट्स अ ग्रेट वे टू लर्न एंड प्रॉब्लम सॉल्व. वी विल ऑल्सो प्रिपेयर यू फॉर इंटरव्यूज. डेफिनेटली अगर आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इंटरव्यूज में आपके काम आएंगे. और तो और सम कुछ जो बड़ी कंपनीज हैं वो ट्रैक भी करती है एंड दे आल्सो गिव लाइक ऑफर्स ऑन द बेसिस ऑफ कि आप अगर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो. कुछ जैसे प्लेटफॉर्म्स है जैसे हैकर रैंक, जिसमें कुछ कंपनीज डायरेक्ट लाइक एक कंपटीशन करती हैं, देन उसमें से जो भी टॉप बंदे होते हैं उनको डायरेक्ट बुलाती है इंटरव्यूज के लिए, राइट? अदर्स लाइक अगर आपने कहीं पे कोई रैंक गेन की है तो you can also put it into your profiles, like resume में डाल सकते हो कि I have achieved this rank in India in performing this competition. I used to remember मतलब मेरे resume में मैंने डाला था कि I had gained one time 36 all India ranking and 85 global ranking on one of the competition, and I had put it into my resume, and that was like attractive, and the interviewer was asking me about that. So that is like the impact of this competitive programming. The idea is to problem solve basically. इससे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक आपके जो नेचुरल दिमाग में जो टेंडेंसी है उसको आप इंक्रीज करोगे. यू विल शार्पन योर ब्रेन बेसिकली. Here are some good study materials for if you are like getting started with. So books में मैं बोलूँगा कि Data Structures and Algorithms Made Easy, ये इंडियन ऑथर की नरसिम्हा कारुमाची. आई थिंक C++ में मैंने पढ़ी थी when I was in like first second year, and it has like data structures and algorithms which are like very simply explained. Second is like head first for Java, C++, C. So this is like for learning the languages. So head first is a very interactive book and it's very fun to like read and study. So I will definitely be suggesting it. Then Cracking the Coding Interview by Gail Lackman McDowell. It's like for interviews preparation, right? So जो लोग third या fourth year में हैं, definitely they should go with the cracking in the coding interview. It will give you very much insight on how to crack the interview. Then websites में GFG तो है ही, CP algorithms, Java T-Point, W3 schools. GFG is mostly for data structures algorithms के लिए. CP algorithms is like directly algorithms जो होती हैं जो हमारे courses में होती हैं उनके लिए. Java T-Point and this type of other websites are like for specific languages. Then W3 schools is like for front-end, mostly specific languages, right? So you can just check this out. YouTube channels में I prefer Edureka
एडोरिका में बहुत सारे जो लैंग्वेजेस हैं उनके फ्री आपको 10 आवर्स के स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे जिससे आप लैंग्वेज पूरी स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड कर सकते हो या रीड कर सकते हो. You should check that out. Pep coding is mostly for like how will you solve the problems like जो GFGV में मिलते हैं उनका easily explain करने के लिए Pep coding is a channel. I would suggest I use it myself for sometimes when I am stuck in some kind of problem which I have not touched in a long time. Lead code is for lead code के जो questions होते हैं उनको समझाने के लिए. And then Telesco is in general for all of this kind of problems. These are some of the YouTube channels I prefer and use in daily. Let's move to our next part, which is interviews. I am like I have brief and more insight on this, and I think I will be very useful for you all to explain you about the interviews. Let's get started. Is there any question till now? If anybody has any comments, okay, let's move. So in interviews, how to land jobs and internships. So in a typical hiring process, there are 3 things. Okay, like सबसे पहले होता है resume shortlist किया जाता है आपका, then coding test लिया जाता है, and then interview direct होते हैं जो जिसमें आपको या तो टेलीफोनिक इंटरव्यू होंगे या तो आपको ऑफिस में बुलाएंगे इंटरव्यू लेने के लिए. So resume shortlisting में क्या होता है कि like जैसे कि आपका resume like other fellow people who are like interested in the job is there, right? And when believe me, like for 10 openings we will get like 1,000 of resumes. Okay, so how to stand out in that so that your resume is shortlisted like above others? Like let's say if I have a job opening, then I will be like from 1,000 I will choose 100 resumes to go ahead with, and out of those 100 we will be trying to find out our candidates, like 10 candidates, right? So this is how it works. So you have to make your resume pinpointed to in such a way that it will be picked by the technical recruiters. Then there comes the coding test. Some of the companies do take coding tests like on HackerRank, HackerRank, and like others also. Like if you will go and try in like foreign companies, then they have like other partners which take the tests with one other company will take your test and then they will suggest to go ahead. Then there comes interviews. अगर आप कोडिंग टेस्ट पास कर जाते हो या अगर मान लो कि कोडिंग टेस्ट जैसे कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो खुद ही कोडिंग टेस्ट लेती है, लाइक जैसे गूगल में जाओगे तो आप टेक्निकल स्क्रीनिंग आपकी एचआर करेंगे एंड देन आपका एक फर्स्ट राउंड होगा. उसके बाद जैसे वो फर्स्ट राउंड अगर आप क्लियर करते हो तो आपका 1 महीने बाद 5 more rounds आपके लिए जाएंगे. So that is like the first round, which is like like for your kind of a coding test basically, ki whether we should move ahead with you or not, like that. Then there comes the interviews. So 4-5 rounds होते हैं generally interviews में. I'll cover more in more details in later slide. Basic requirements for landing these jobs and internships are good programming skills, of course, good behavioral and analytical skills. आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है, and how you behave, how you talk, how you communicate, and then ability to learn and understand, then commitment and dedication to deliver. Ability to learn and understand, this is what we are looking for actually. I have an example which I give a lot of people is like companies are looking for brain which they can make in future do anything else like also. So kind of it's like we are trying to buy a land in which we can grow any kind of crop. हम कोई भी crop उसमें उगा सकें. हमको land चाहिए. हम लोग already ready crop नहीं चाह रहे हैं. हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा land मिले जिसमें हम कुछ भी उगाया जा सके, kind of. Okay, so this is like an example I give to a lot of people. Yeah, commitment and dedication to deliver. So people would have ideas, people would have abilities, but if they do not take any action on it, it's nothing, right? अगर हम लोग action नहीं लेंगे तो it's just an idea which is not going anywhere. So dedication to deliver होना चाहिए, like just get the shit done. That's it. How will you get your resume shortlisted?
So I would suggest like put your projects, minor project for landing internship interviews, major project for landing job interviews में आपको project डालने पड़ेंगे आपके इसमें anything like which can say कि आप कोड करना जानते हो आपके रिज्यूमे में अगर आती है तो like it will be highlighted basically अगर आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया हुआ है जो कि रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम से ज़्यादा रिलेट करता है तो देन डेफिनेटली यू विल बी more like on the topper side to picked up उसी प्रकार से मेजर प्रोजेक्ट फॉर लैंडिंग जॉब इंटरव्यूज आपका जो सिर्फ आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है अभी राइट आप 4th ईयर तक एक्सपीरियंस सिर्फ इंटर्नशिप से गेन कर सकते हो अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है इसलिए टिल देन आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ऐसा कन्वे करना चाहिए कि हाउ दे रिलेट टू द मोर ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कि यू डिड समथिंग या आपने ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट किया हुआ है किसी प्रोजेक्ट में all those things are very much like impacting on your resume then what else other parts you should include college wide accolades आपने क्या क्या किया कुछ award जीता या कुछ भी involvement in different activities आप किस type की communities में join कर रहे हो events आपने करवाए all this also are like highlighting point it tells us that you are a doer basically you are not just a person who are like just going through the flow but doing stuff basically then competitive programming profiles अगर आप competitive programming करते हो तो उसके profiles आप डाल सकते हो उसमें कितने points हैं आपके you can showcase that then ranks अगर आपने कहीं लगाई है तो आप you can put it then good resume आपका होना चाहिए exposure through LinkedIn profiles hiring website profiles like LinkedIn profile में आप लाइक बना सकते हो उससे आपको बहुत सारे टेक्निकल रिक्रूटर जो है वो रिच करेंगे देन हायरिंग वेबसाइट प्रोफाइल्स जैसे naukri.com पे आपका प्रोफाइल होना चाहिए आपका लाइक रेज्यूमे वहाँ पे होना चाहिए एंड फ्रॉम देयर आल्सो यू विल बी लाइक पिक्ड बेसिकली देन नेटवर्किंग करने से आपको विद रिक्रूटर्स इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स तो आपको इनसे रेफरल्स मिल सकते हैं इन फ्यूचर दैट आल्सो यू शुड बी फोकसिंग ऑन Next is what happens in a hiring interview. So as I said earlier that I will be covering the interviews in later slides. So basically in a hiring interview, there are like 4 rounds, 4 kind of rounds. There could be multiple rounds in it. मतलब उसमें एक कैटेगरी में multiple चीजें हो सकती है. So technical screening, I told you also कि technical screening where we are shortlisting a candidate. तो इसके लिए या तो हम कोडिंग टेस्ट करवा सकते हैं या तो एक फर्स्ट इंटरव्यू ऐसा भी हो सकता है जिससे कि हम लोग बेसिकली वी कैन डिसाइड दैट वेदर टू गो अहेड विद द कैंडिडेट और नॉट देन देयर कम्स द अदर पार्ट ऑफ द इंटरव्यूज लाइक डीएस अल्गो राउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड कुछ कंपनीज एक या 2 लेती हैं कुछ कंपनीज ज्यादा लेती हैं गूगल अमेज़न दिस काइंड ऑफ कंपनी डूज लाइक 2-3 राउंड्स ऑफ इट देन देयर कम्स डिजाइन राउंड सिंस आप अभी कॉलेज में हो तो इतना ज़्यादा लाइक इट विल बी मोर ऑफ लो लेवल डिज़ाइन देन हाई लेवल डिज़ाइन तो डिज़ाइन 1 राउंड वुड बी देयर एटलीस्ट फॉर द बिगर कंपनीज अगर कुछ कंपनीज जो लाइक इनिशियल में ले रही हैं तो दे विल माइट नॉट फोकस ऑन द डिज़ाइन राउंड देन देयर कम्स द बिहेवियरल राउंड which says that you are a good person who can communicate your ideas and good analytical skills and are a right fit for the company. So mostly ये जो rounds होते हैं वो 45 minutes 1 hour चलते हैं behavioral rounds कभी-कभी 30 minutes के भी रख लेते हैं that totally depends. Internship में ये rounds छोटे होते हैं internship के लिए एक ही question पूछते हैं instead of 2 questions so could be 30 minutes but other times normal interview will be of 45 minutes to 1 hour. Then what will be the level will be depending on the company mostly like if it's a tier A company tier 2 company then like the level will be higher but generally you should focus कि medium level के questions पूछे जाते हैं कुछ companies easy भी पूछती हैं कुछ companies hard भी पूछती हैं depending on the level of the company and level of your like when you are joining basically अगर internship के लिए तो कम level के questions पूछे जाएंगे अगर job के लिए तो ज़्यादा level के questions पूछे जाएंगे what they look for so what is being looked is your speed how fastly you are solving the problem if you can solve
2 questions in 45 minutes. Then what is your accuracy? आपने कॉर्नर केसेस हैंडल किए या नहीं किए हैं? आप खुद से ये कॉर्नर केसेस गेस कर पाए कि नहीं कर पाए? ऑल दोस थिंग्स. देन टेस्टिंग, आप खुद से अपना कोड टेस्ट कर रहे हो, एक सैंपल यूज केस सैंपल आपने बनाया टेस्ट का, एंड देन आप खुद से उसको टेस्ट कर रहे हो. दैट इज ऑल्सो समथिंग वी लुक फॉर. लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, आपने कितनी फास्टली कोई चीज़ गेस की, या मतलब आपने सही राइट डायरेक्शन में एक ही बार में उसको गेस कर लिया. क्वेश्चन हाउ टू गो अहेड विद दैट. देन लैंग्वेज की डेप्थ, आप कितने अच्छे से उस लैंग्वेज के बारे में जानते हो, कितना अच्छा फंक्शन लगाते हो. कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी कि हम लोग फॉर लूप यूज कर रहे होते हैं, देन देयर इज लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ फॉर लूप इज आल्सो देयर, लाइक फॉर ईच हो गया. तो अगर क्या आप उसके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो. देन डिबगिंग स्किल्स, लाइक आप अपना कोड खुद से रन करके देख रहे हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, तो देन यू आर एबल टू डिबग इट आल्सो. दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग. देन डिजाइन में भी आपसे शायद लो लेवल डिजाइन ही पूछते हैं, क्योंकि बिगिनर्स हो आप. एंड अगर आप 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करते हो, तो देन आपसे हाई लेवल डिजाइन भी पूछते हैं. मोस्टली हाई लेवल डिजाइन के लिए आपको उतना ही आना चाहिए जितना आपके कॉलेज के कोर्स में है. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है हाई लेवल डिजाइन. Nobody is expecting you to give the answers like an experienced person, because you will be joining as an internal, या मतलब छोटे लेवल पे आप लोग ज्वाइन करोगे, राइट. तो आप बेसिकली एकदम से जाके हाई लेवल पे आपको नहीं पुट करेंगे डिजाइन के लिए. यू विल बी मोर ऑफ की लो लेवल डिजाइन, आप क्लासेस कैसे डिजाइन कर रहे हो, UML डायग्राम्स बना रहे हो, एंड ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर. How to prepare. I have told you more about interviews and all those things, but how will you be preparing for it? So competitive programming is the first way and foremost, like the way to prepare for your interviews. I suggest it a lot, because it will land you more interviews, and then you will be cracking those interviews also. So you should definitely be doing the competitive programming. Then you should target roughly around 300 questions. इसमें आप मतलब लाइक आप इन डेप्थ आप सारी चीजें टच या कवर कर लोगे, ठीक है. 300 क्वेश्चंस अगर आप लगाओगे, तो इसके ऊपर आपको जाते रहना पड़ेगा विद टाइम. आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा. वापस से 300 क्वेश्चंस को वापस लगाओगे. whenever you have like interview, you will be doing it. So when I say 300 questions, I am not saying कि आप सिर्फ easy 300 questions कर लो. That will be like waste of time. But I will suggest कि 100 questions easy करो, 150 around medium, and then 50 hard questions लगाओ. What are the platforms you can do competitive programming on? Lead Code में आपको contest मिल जाएगा. Codeforces is like a very good site for competitive programming. In it, there is like you can find out mistakes in other people's code also. अगर आप मतलब दूसरे लोगों के कोड में मिस्टेक्स निकालते हो, तो देन आपको पॉइंट्स मिलते हैं. इससे आपकी कोड रीडिंग एबिलिटी बढ़ती है, आपकी डिबगिंग स्किल्स जो है वो बढ़ती है. So this is a good platform for competitive programming. CodeChef हो गया, interview bit हो गया. Then for learning, you should definitely rely on GFG, YouTube channels, all the other things which I have said earlier also in the study materials. That is also. And the last and the most very important thing is practice. You have to do practice. You have to keep yourself ready for the interviews. So practice is the only way to go forward. How to build your resume? Normal है. Trying a single page format, because आपके इसमें बहुत ज़्यादा information add करने के लिए नहीं होगी अभी. So you should go with a single page resume, where you will be putting like your objective, what are your education grades and marks, school 12th 10th percentage. Then projects, minor project, major project you will be putting. Do not put anything which is like which you do not speak about. So keep the projects same. Put the details which you can talk about in your resume, because behavioral rounds में आपसे पूछा जाएगा. अगर first rounds में नहीं पूछते तो. Then skills is the major part which you should put. अगर आपने कोई skill acquire की, तो you should definitely put it. But you should be able to tell any questions also. Okay, it shouldn't be कि you have put some skills and you are not able to tell much about it. So be mindful about that.
एंड वही चीज़ रखना जो जिसके बारे में आप अच्छे से बोल सकते हो, अच्छे से बात कर सकते हो। देन अचीवमेंट्स, अगर आपने कुछ अचीव किया है अपने कॉलेज में या किसी और कंपटीशन में या कहीं पे भी, तो यू कैन डेफिनेटली पुट दैट। इंटर्नशिप अगर आपने की है तो उसका एक्सपीरियंस, वहाँ पे क्या प्रोजेक्ट किया था आपने, क्या काम किया था, दैट यू कैन डेफिनेटली ऐड। देन लिंक्स टू योर प्रोफाइल्स, आई वुड सजेस्ट कि लिंक्डइन का आपकी लिंक यू कैन पुट। देन कॉम्पिटिटिव कोडिंग वेबसाइट की अगर आपने कहीं अच्छे से मेंटेन किया हुआ है तो यू विल डेफिनेटली हैव कि इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपने, आपकी रैंकिंग या आपके पॉइंट्स ऐसे चल रहे हैं, तो यू कैन पुट दोस लिंक्स आल्सो देयर। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू मेंटेन अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल। करेंटली जो लिंक्डइन है वो आपका प्रोफेशनल गेटवे है। अभी लिंक्डइन इज द बेस्ट, सम अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो देयर, but currently you can have at least the LinkedIn. It should consist your experience, skills, awards, certificates, all these things. आप कुछ certificates, आपने अगर certificates course किए हुए हैं तो you can put it in your LinkedIn. उससे आपको जो technical recruiters हैं then they can focus on कि हाँ this is skill we are looking for and this guy has this certificate, right? जैसे कुछ certificates you can put, right? Udemy का certificate आप लगा सकते हो, Coursera का लगा सकते हो, LinkedIn Learning का आप लगा सकते हो certificate वहाँ पे। Other certificates you can also put, awards आपके जो भी हैं, जो भी आपने resume में awards skills लिखी हुई हैं, you can put in your LinkedIn profile. Then connect with your alumni, seniors and recruiters and known people to get more reach and more opportunities. मतलब अगर आपकी रिच बढ़ेगी तो then आप रेफरेंस ले सकते हो, आप उनके रडार में रहोगे। कोई भी रिक्रूटर है वो आपके अगर कांटेक्ट में है तो then they will reach out to you for any job openings on their like on their site. So you should be connected with them. Then follow companies, influencers, job listings, like job कौन सी चल रही है, influencers. They can tell you like what is going on in an industry. Companies can tell you कि like what new they are doing, all those things. Then keep up with the trends and technologies. So if you are like following and in any technology, then you should know what are the new things which are coming, right? Like let's say अगर आप जावा में हो तो आपको पता होना चाहिए कि जावा का जो न्यू वर्जन है वो उसमें क्या क्या नई चीजें आ रही है। That will keep you up to date and like behavioral rounds में आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे लर्न करते हो, आप up to date कैसे रहते हो ट्रेंड्स से। तो you can follow those pages and follow other like Medium हो गया या blogs you can follow. So what are some key takeaways from this session? So what I say is like be a problem solver, do coding daily as a hobby. So you have like limited motivation and sometimes you are motivated, okay, you want to do something, आपको कुछ करके दिखाना है, and then you are doing coding, so that is not very enough thing, okay? And motivation is आपके पास थोड़ा सा ही होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, आप 1-2 घंटे पढ़ लोगे एंड देन फिर अगले दिन गायब हो जाओगे। उससे बेटर है कि आप उसको हॉबी बना लो। आप मतलब एक IT इंडस्ट्री में हो तो आपको कोडिंग है एज अ हॉबी करना चाहिए, लाइक 1-2 घंटे रोज करो एंड like try solving at least 300 to 400 problems on competitive programming sites like Lead Code, CodeChef, and all those things. Make your social accounts if not done already. Do competitive programming. Do 2 projects in college, minimum 2 projects. अगर आप extra कहीं से कुछ gather करके कर पा रहे हो या किसी भी like जैसे CodeAdept हो गया, उसमें अगर आप पार्ट ले रहे हो और अदर प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो देन डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर रेज्यूमे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर गेटिंग और लैंडिंग द जॉब। बट एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट जो होते हैं मेजर माइनर प्रोजेक्ट, उनको अच्छे से करो। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। इन्वॉल्व विद कम्युनिटीज, डू टेक्निकल इवेंट्स, डू साइड प्रोजेक्ट्स एंड मेंटेन गुड CGPA. Okay, Q&A. Any questions? Thank you, sir, for your wise words. Anyone regarding doubts can ask your doubts by raising the hand, and we will allow you. Arpit, you can ask your doubt. Hello. Hi. Am I audible? Yes, you are. Yes, sir. Good afternoon, sir. So my question is that what is the difference between programming language and scripting language?
स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इन प्रोग्रामिंग, आजकल स्क्रिप्टिंग में मोस्टली जो लाइक ये वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस नहीं होती है, एंड इसमें मतलब लाइक आपको एज सच फुल मतलब डेफिनेटिव कोड नहीं होता है. I think more though you can take it from any websites, but I think these are the major differences. मतलब प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में लाइक डेफिनेटिव ऑर्डर नहीं होता है, स्ट्रक्चर्ड कोड नहीं होता है. वहीं अगर आप लाइक जैसे जावा में जाओगे तो जावा में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखना पड़ेगी, एंड लाइक स्क्रिप्टिंग में ऐसा नहीं है. आप जावा स्क्रिप्ट देख सकते हो, उसमें कोई डेफिनेटिव लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कोड नहीं मिलेगा आपको. इट विल बी लाइक यू कैन डिफाइन योर फंक्शन एनीवेयर, क्लासेस वगैरह नहीं होती है. Yes, sir. Danish, you can ask her out. सर Yeah. सर C++ सीखने के बाद जैसे हमें ऐप डेवलपमेंट में जाना है तो हमें जावा सीखनी चाहिए या डायरेक्ट कॉटलिन सीखनी चाहिए, क्योंकि कॉटलिन ज्यादा मॉडर्न लैंग्वेज है. कोटलिन जो है वो जावा पे ही बेस्ड है, मतलब इट्स ऑन टॉप ऑफ जावा, एंड जावा से आप कोटलिन इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, एंड कोटलिन से जावा आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनी आईडी. तो इट्स अप टू यू, लाइक कोई भी यूज कर सकते हो आप. Kotlin is more like kind of based on like JS kind of language. So if you do that, then it will be helpful if you are like looking forward for learning JS also. Okay, sir. Sir, we have some doubts in the comment box as well. कार्तिक, you can ask your doubt, and बाकी सर other doubts comment section में भी हैं, तो आप एक बार देख लीजिए. सर जो आपने रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग का बोला, सर उसमें जो पॉइंट्स थे वो है, उसके बाद भी कई बार लोगों के शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं, तो वो ऐसा क्या पॉइंट देखते हैं वो लोग? क्योंकि जब आपने बोला कि 100,000 में से वो 100 सिलेक्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस में वो ऐसा क्या देखते हैं? So it's always like how many interviews can a technical team can take, right? So अगर मान लो कि उनके पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके ग्रेड्स वगैरह अच्छे हैं, या अगर मान लो कि बहुत सारा कैंडिडेट्स है तो एनालिटिकल कोई सा टेस्ट रख लेंगे जिसमें लाइक कम कैंडिडेट्स बचेंगे. तो इट्स नॉट समथिंग यू कैन से, लाइक आपके पास कितने एक्कोलेट्स हैं आपके रिज्यूमे में, वही डिपेंड करता है. That is the major thing, मतलब कि आप how you are standing out from others in your resume. It's what is like the most important thing to put in your resume. Like some companies have some criteria. Okay, they have to take the candidates from this college or tier 1 college होना चाहिए and all those things. But I think that is not the norm as of now. So if you keep like the accolades, or if you keep on doing competitive programming and events and have good things to showcase in your resume, then I think it will definitely be standing out and it will be like getting selected. Okay, thank you, sir. How to start in first year? I think this I have already told, right, Dave? Then can we grab an internship with C++? Yeah, some companies are there which are like working and in coding in C++. But I think the major languages which our industry is currently using is Java, Node.js, Golang, and all those high-level languages. But then I think Java is like good to go ahead. If you know C++, I think Java is also easier for you. So you can learn that. कोई भी ब्रांच कोडिंग के लिए अप्लाई कर सकता है. हाँ, आजकल बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यूसली कोडिंग में इंटरेस्टेड हो एंड आप लाइक अपना रिज्यूमे अच्छे से कोडिंग के अराउंड बिल्ड करते हो, लाइक आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं जो कि जिसमें आपने वेबसाइट बनाई है, ऐप्स बनाई है, तो इट विल मेक योर रिज्यूमे स्टैंड आउट इन द टर्म्स ऑफ कोडिंग टाइप. सो
doesn't depend anymore. Any branch, anyone who can learn code is like allowed. So what is the difference between programming and coding? Programming and coding, I do not think much difference in the terms of CAC. It's both are same. Basically, programming ही है जो coding हम लोग बोल रहे हैं. Aditya, you can ask your doubt. To be a full stack developer, you should know front end languages, back end languages, and then database side is like is query language basically. Sir, C++ language. सर हेलो सर जैसे जावा कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है और सी प्लस प्लस सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, तो सी प्लस प्लस सीखने के क्या फ़ायदे हैं? C++ जो है लाइक काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है एंड उसमें मेमोरी के एलोकेशन वगैरह का जो कंसेप्ट है वो डीपली समझाया जाता है. जावा में मेमोरी एलोकेशन जो है वो इतना डिटेल में आपको कवर खुद से नहीं करना पड़ता है. ऐसा है कि ये लाइक दिस लैंग्वेजेस आर लाइक बिल्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, राइट. जैसे कि जो जावा है वो सी पे बनी हुई है एंड C++ भी सी पे बनी हुई है. ऑन द अदर थिंग कि C++ में आप ऐसे कंसेप्ट कवर करते हो जो कि आपको कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होंगे. ऑन द लाइक जावा इज लाइक मोर ऑफ लाइक it will not have those problems to you. Like it will be like taken care by itself already. So yeah, like C++ is like more on basic side. If you want to understand more around how the computer works and all those things, then you can. I think it's personal preference. I think it's not like you cannot do anything. You can take both. You can learn both. Like in my journey, I have learned C. Then I have learned C++. And I thought that okay, C++ is not enough. Then I learned Java. So yeah. Vikas, you can ask your doubt. सर दूसरी लैंग्वेज सी प्लस लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेज प्रेफर नहीं कर सकते? कर सकते हो आप, कोई भी लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हो. मतलब you can go with Java. You can go with Python also if you want, if you like Python. It's not that C++ लैंग्वेज भी अच्छी है ना? हाँ, ये बेसिक लैंग्वेजेस है और मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो आपकी जर्नी तो आप C++ आई थिंक फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, इसलिए यू कैन गो अहेड विद दैट. गुड आफ्टरनून सर, हम इसका फ्रॉम इंस्टाग्राम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. या टेल मी. सर मेरा क्वेश्चन तो कोडिंग से रिलेटेड नहीं है, बट मेरे माइंड में बहुत दिनों से क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी माइंड का यूज 13% किया था, तो उनकी जनरेशन इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं. जैसे अब करंट में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि छोटी छोटी सी कैलकुलेशन करने के लिए स्टूडेंट कैलकुलेटर का यूज करते हैं. तो क्या सर अपकमिंग जनरेशन में टेक्नोलॉजी के चलते अपने माइंड का यूज 13% से ज्यादा कर सकता है कोई? I do not know. This I am right person to answer this question. But yeah, definitely like this like छोटी छोटी चीजों के लिए आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो, आपको अपने माइंड का भी यूज करते रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा कंप्यूटर पर डिपेंड करो. Yeah, you can always use pen and paper to do stuff, and you should do it actually. Mind calculation, like जो छोटे कैलकुलेशन है आपको अपने दिमाग से ही करते रहना चाहिए. तो definitely will be sharpening your brain. Okay, sir. Thank you so much, sir. Yeah, Aditi, you can ask your question. Mridul, okay.
Sir, should we जैसे कि हम focus लोग on बहुत सारे फर्स्ट ईयर वाले हैं और हमने अभी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट ही करी है और हम सारे ही अच्छी कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे रोड मैप क्या होगा फर्स्ट ईयर का? For the first years, I would suggest कि आप like एक लैंग्वेज पे फोकस करो, एक या दो लैंग्वेजेस पे. देन आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट पे जाके कोडिंग करो एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस आप लर्न करो. अगर आप किसी कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व होकर कुछ प्रोजेक्ट्स कर पा रहे हो तो देन यू शुड डू दैट. देन आप वेबसाइट की अगर वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो देन HTML CSS you can do. Depends to you, like depends on you, like how much more involved you are, then you are going to learn those things, right? अगर आपको मैं अभी बता दूं कि आप ये लर्न करो एंड आपको कोई यूज नहीं होगा उसका, तो आप उसको ज्यादा दिन तक नहीं याद रख पाओगे, राइट? But on the other hand, if you learn something which you are going to use, then it will be more कि उसका यूज केस है, तो देन आपने उसको लर्न किया है, आप उसको रिमेम्बर लाइक आप अपनी मेमोरी में रख पाओगे, उसको इजीली फॉरगेट नहीं करोगे. तो लेट्स से कि आप किसी प्रोजेक्ट में हो जिसमें आपको कोई लैंग्वेज यूज करनी है, तो देन यू कैन लर्न दोज थिंग्स. मोस्टली आपको मतलब बेसिकली एक या दो लैंग्वेजेस आनी चाहिए एंड देन यू कैन डू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इन दैट. If you are not working on anything else, then at least you should be doing this thing. Yeah, जैसे हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं तो मतलब हम स्टेबल नहीं रह पाते हैं, मतलब उस क्वेश्चन के फिर हम आंसर सॉल्यूशन बहुत जल्दी चले जाते हैं कभी कभी, मतलब लॉजिक आ रहा होता है. Can you repeat, Mridul? तो हम बहुत जल्दी आंसर को अप्रोच कर सकते हैं. यस सर. सर जैसे हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, हम कोडस्टैक पे जाते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वेबसाइट पे जाते हैं और ट्राई करते हैं, तो हम उस पर स्टेबल नहीं रह पाते हैं. मतलब कि जैसे मैंने क्वेश्चन खोला और मैंने ट्राई करा, मैं थोड़ा सा लॉजिक बना पर फाइनल आंसर नहीं आया. जैसे मैंने उसको रन सबमिट भी करा तो बहुत सारे टेस्ट केस गलत हो गए, तो फिर हम सॉल्यूशन देख लेते हैं. लेकिन ऐसे बोलते हैं कि आप स्टिक रहो उस पर स्टिक रह नहीं पाते, मतलब बहुत जल्दी सॉल्यूशन देख लेते हैं. हाँ. ओके, मतलब आपको अगर लर्न करना है तो देन आप इतनी जल्दी सॉल्यूशंस मत देखो. अगर आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो उसको खुद से बनाने की कोशिश करो, अगले टाइम नेक्स्ट टाइम फिर से करके देखो उसको. हमने सॉल्यूशन देख भी लिया और आपको अगर वो याद रह रहा है तो देन इट्स सॉल्विंग इट्स पर्पस बेसिकली, राइट? कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आपने उसका आंसर देख लिया, ठीक है, आपने देख लिया, आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो. नेक्स्ट टाइम उसको जब प्रैक्टिस करोगे तब मत मतलब फिर से मत देखना. गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज ईश्वंदानी एंड आई एम इन फर्स्ट ईयर. सर मेरा डाउट ये था कि अभी जैसे हम फर्स्ट ईयर में हैं तो मैं जेई बैकग्राउंड के कारण से अभी तक इंट्रोवर्ट था, तो मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ चीजें, सोसाइटीज ज्वाइन कर रहा हूँ. तो क्या कोडिंग में अगर नहीं करूँ फर्स्ट सेमेस्टर में और ट्राई करूँ कि चीजें एक्सप्लोर कर लूँ पहले, तो उससे मैं पीछे रह जाऊँ, ऐसा कुछ हो सकता है? या फिर मैं सेकंड ईयर से चालू करूँ तब भी पॉसिबल है मेरा कैचअप करने का चीजें? अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में है या आईटी ब्रांच में है तो डेफिनेटली आपको कोडिंग करते रहना चाहिए. अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हो, अच्छी बात है, बट आप 1 घंटा अपने शेड्यूल से साइड में निकाल के ये कर लो, बिकॉज लाइक इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर लाइक ग्रेड्स ऑल्सो. आपको आपकी लर्निंग जो इजी होगी, आपको नए सब्जेक्ट्स जो पढ़ाएंगे और आपको उसके बारे में थोड़ा सा कंटेक्स्ट थोड़ा सा पहले से पता होगा कि, तो अच्छा होगा बेसिकली. तो जस्ट कि ऐसा ही नहीं होता है कि हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं तो सिर्फ एक्सप्लोर ही कर रहे हैं. यू हैव टू स्टडी विद टेकिंग आउट सम टाइम. तो अगर आप अभी चलो ठीक है आप कोडिंग नहीं करना चाह रहे हो तो देन आप कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो. उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ लैंग्वेजेस आनी चाहिए. ओके सर. Aditi, you can ask your doubt next. Good afternoon, sir. Should focus more on development or C? Sorry, can you repeat?
So my question is, should we focus more on development or CP? It's not CP, like development or CP as in? I do not get your question. Can you repeat? Development or competitive programming? Okay. सी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपको इंटरव्यूज में नीडेड होगी ही होगी, ठीक है, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो मतलब मेजरली लाइक ये क्वेश्चन पूछती हैं, ओके। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ डेवलपमेंट कर रहे हो, तो या लाइक यू कैन डू दैट, बट आपको एटलीस्ट कुछ प्रॉब्लम्स तो जरूर लगाने पड़ेंगे व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज। अदर पार्टीज की आप लाइक डेवलपमेंट कर रहे हो, दैट इज गुड। सम कंपनीज डू फोकस ऑन दैट कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स करे हैं, क्या इंटर्नशिप करी है, इंटर्नशिप में क्या प्रोजेक्ट्स किए थे, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट लाइक जैसे आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड निकालने के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो लगाने पड़ेंगे कुछ ना कुछ। सो इट्स बेसिक मिनिमल बेसिकली, मतलब इतना तो आना ही चाहिए काइंड ऑफ। Thank you, sir. Thank you, sir. Your session was really insightful and helpful for us, for all us first years and second years, third year students as well. And now I would like to request all of you to open your camera so that we can take a screenshot and share it on our handles, as it was an interactive session. Those who can. All of you can turn on your camera